Hello children, today we will solve some division problems. First problem is this, and third is here. Division is explained by using two different cases. Two different cases are here. First one is when the first digit of dividend is equal to or greater than divisor. In this case, firstly, we take first example 5310. We will write these digits like this. To solve this problem, we will write the table of 5. We will start the table of 5 from zeros. We will start the table from 5 zeros are 0. Now next, here there is no need to write 5 tens because we will never use tens term in division problems. Now we will check the first digit of dividend. First digit of dividend is equal to 5. We will write here 5 and divisor which are equal. 5 is equal to 5. Now we will find 5 in the table of 5. Here is 5. So 5 ones are 5. We will write here 5 ones are 5. Then minus 5 minus 5 0. We will write down here 3. Now we will find 3 in the table of 5. There is no 3. कोई 3 यहाँ पर नहीं है. So we will find a number in the table of 5 which is just less than 3, जो कि 3 से एकदम छोटा है. Here 0 is less than 3. 0 is just less than 3. So 5 zeros are 0. We will write here 5 zeros are 0. Now minus 3 minus 0 3. Here I will write 1 here. Now we will find 31 in the table of 5. 31, there is no 31 in the table of 5. So we will find a number in the table of 5 which is just less than 31, जो कि 31 से एकदम छोटा हो, just less than 31. 30 is just less than or 31. Now 5 6 30. Minus 1 minus 0 1. Now we will write down here 0. Again we will find 10 in the table of 5. 0 5 10. 10 is here. We will write 5 to the 10. ये हमारा रह गया 30 वाला. 5 6 30. 5 6 30. Now 5 to the 10. 10 minus 10 minus 10 0. 0 is remainder. हमें इस प्रॉब्लम में हमें ध्यान रखना है. डिवीजन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें ध्यान रखना होता है जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं
जैसे हमने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया है, तो हम 5 लेंगे या फिर हम 5 से छोटे डिजिट, 5 से बड़े डिजिट हम नहीं ले सकते। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 को डिवाइड किया है, तो हम 3 से बड़े डिजिट हम यहाँ पर नहीं ले सकते, या तो हम 3 से छोटे डिजिट लेंगे या फिर 3 लेंगे। हमें हमेशा इस डिवाइड वाले क्वेश्चंस में इस बात का ध्यान रखना होता है। बड़े डिजिट हम कभी यूज नहीं कर सकते, हमेशा जिसको हम डिवाइड करें उससे छोटे डिजिट हमें यूज करनी है। जैसे 31 से छोटे डिजिट रखनी है, या फिर हम 31 रख सकते हैं या फिर उससे छोटे डिजिट। नेक्स्ट 8000, सेकेंड इज 8947. We will write here like this, divided by 7. We will write here the table of 7. Again we start from zeros term. There is no need to write tens term. हमें जो है tens में लिखने की जरूरत नहीं है। Again we start. Firstly, we will compare the first digit of the dividend with divisor. 8 is greater than 7, so we will take only one digit. जब ये हमारी डिजिट बड़ी होती है या इक्वल होती है, हम सिर्फ एक डिजिट के साथ डिवाइड करते हैं। 7 1 जा, we will find here 8. There is no 8. 7 is just less than 8, so we will write here 7. 7 1 is 7 minus 8 minus 7 is equal to 1. Now 9. We will write down here 9. 7. We will find 19 in the table of 7. There is no 19 in the table of 7. Now we will find the less than value of 19, just less than value of 19. 14 is the just less than value of 19, so we will write here 7 2 ja 14. 7 2 ja 14. Now minus 9 minus 4 is equal to 5. Now we will write here 4. Again we will find 54 in the table of 7. There is no 54 in the table of 7, so we will find just less than value of 54. There is 49. 49 is the just less than value of 54 in the table of 7. (14 minus 9 is equal to 5, and 4 minus 4 is equal to 0. Now we will write here 7. Again we will find 57 in the table of 7. There is no 57 in the table of 7. We will find just less than value of 57 in the table of 7. We will find 7 is 56, so we write here 56. 7 minus 6 is equal to 1. 1 is remainder. Now answer will be, कैसे लिखेंगे हम आंसर? आंसर हम लिखते हैं ऐसे. We will write answer like this. 8974, it is our dividend divided by 7. It is our divisor, and ये मैं भूल ही गई लिखना. यहाँ पे हमने क्या किया था? 7 7 जा 49. यहाँ पे हमने क्या किया था? 7 7 जा 49. पहले हमने 7 1 जा 7, then 7 2 जा 14, then 7 7 जा 49, then 7 8 जा 56. We will write here 7 8 जा 56. 1
2, 7, 8. It is our quotient. R is equal to, remainder is equal to 1. We will write answer like this. Again, next question is 6, 5, 7, 5, 5. We will write down the question like this, divided by 9. Again, we will write the table of 9. We will start from zeros. 9 zeros are 0. Again, there is no need to write tens. Now, firstly, we will compare the first digit of the dividend with the divisor. First digit of the dividend is 6. 6 is less than 9. क्योंकि ये वाला डिजिट छोटी है, सो वी विल कंबाइन 6 and 5. हम इन दोनों क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे. 65 को हम डिवाइड करेंगे. जब हमारी ये छोटी होती है या इज इक्वल टू होती है, तब हम डबल डिजिट नहीं लेते हैं, दो डिजिट्स को कंबाइन नहीं करते हैं. लेकिन जब हमारी ये डिजिट, अंदर वाले डिजिट यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है डिविडेंड की, वो हमारी छोटी होती है डिवाइजर से, सो तब हम दो डिजिट्स को कंबाइन करते हैं. नाउ वी विल फाइंड 65. There is no 65 in the table of 9. So we will find just less than value of 65 in the table of 9. In the table of 9, 63 is the just less than value of 65. So here 9 7 is 63. We will write here 9 7 is 63. Now minus 5 minus 3 is equal to 2. We will write down here 7. Again, we will find 27 in the table of 9. 9 3s are 27. We will write here 9 3s are 27. Minus 7 minus 7 is equal to 0. 2 minus 2 is equal to 0. Again, find this, write down here. We will write 5 here. Now 5. We will find 5. There is no 5 in the table of 9. So now we will find the just less than value of 5 in the table of 9. 9 के टेबल में हमें 5 से एकदम छोटी वैल्यू ढूंढनी है. 5 से एकदम छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 0. So 9 zeros are 0. 9 zeros are 0. Now minus 5 minus 0 is equal to 5. Again we will write down here 5. हमें नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट ऐसे डिजिट नीचे नोट डाउन करते जाना है. Now 5. We will find here 55 in the table of 9. There is no 55 in the table of 5 or in the table of 9. So we will find here just less than value of 55. इस टेबल में जो 55 से एकदम छोटी वैल्यू है वो है हमारी 54. So we will write here 54. 9 6 are 54. 9 6 are 54. Here minus 5 minus 4 is equal to 1. 1 is remainder. Answer will be, we will write answer like this: 65755 divided by 9, and answer will be 7306. Remainder is 1. It is our dividend, it is our divisor, it is our quotient, and it is our remainder. हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जो हमें लाइन डालनी है हमेशा दो डिजिट के बाद डालनी है. 1 2 लाइन, 1 2, फिर हम लाइन 1 2 लाइन 1 2. हमें हमेशा दो डिजिट के बाद माइनस करने के बाद लाइन डालनी. बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं. ठीक है.
ओके, थैंक यू। सॉरी, ये बाय मिस्टेक हो गया। 7 9 63। हियर वी विल राइट 63. करेक्ट आंसर इज 63. थैंक यू।